And I would like to quote Savitrimai Phule again here. Um, After this inspiring story, is we shall overcome and success will be ours in the future. The future belongs to us. That's what she said. Um, our next speaker is Disha Wadekar. Disha Wadekar, a little bit about Disha Wadekar. She is an advocate in Supreme Court of India, New Delhi. Her work involves representation in cases of campus discrimination, atrocities against scheduled caste and scheduled tribes, forest rights claims, and custodial torture and deaths. She has also headed a legal resource center set up under a project by London School of Economics. Over to you, Disha Wadekar. I think this is an amazing opportunity for me and an amazing day to be sharing the platform with such beautiful, amazing, inspiring women. And on the occasion of Savitrimai's Jayanti, Jai Savitri to everybody. मैं थोड़ा इंग्लिश और थोड़ा हिंदी में बात करूंगी. आई थिंक थोड़ा सबको समझ आए इसलिए. हम एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में जो सबसे ज्यादा जिन्होंने एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को मुझे सिखाया, वो दो आदिवासी महिलाएं थी, पारधी समाज की महिलाएं. एक मेरी नानी लीलावती और मेरी माँ शारदा. और मुझे आई थिंक उनके बारे में मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि मेरी नानी जो है, पारधी समाज, जो लोग जिनको पता नहीं है, तो पारधी समाज इज अ कम्युनिटी विच इज एन एक्स क्रिमिनल ट्राइबल कम्युनिटी, आदिवासी कम्युनिटी है, बट जिसको क्रिमिनलाइज किया गया है. और इतना क्रिमिनलाइजेशन है और इतना सोशो इकोनॉमिक कंडीशन खराब है इस कम्युनिटी का, कि पढ़ना लिखना, एजुकेट, एजुटेट, ऑर्गेनाइज, ये जो ये मंत्रा है जिसे हम बार बार दोहराते हैं अम्बेडकराइट मूवमेंट में, फुले अम्बेडकराइट मूवमेंट में, वो पारधी कम्युनिटी तक पहुंचा नहीं है. बट मेरी नानी जो थी वो 10वीं पास थी उस जमाने में. अमरनेर नाम के खानदेश के एक बहुत छोटे से गांव से वो आती थी, बट पढ़ाई में अच्छी थी. तो उन्होंने 10वीं पास कर ली थी. उनकी शादी नहीं हो रही थी क्योंकि वो ज्यादा पढ़ ली थी. एंड उनको जब उनकी शादी हो गई और उनको एक कॉल आया, टीचर का कॉल आया था. और तभी मेरे नाना भी अप्लाई कर रहे थे टीचर के लिए, टीचर की जॉब के लिए, बट उनको कॉल नहीं आया था. तो वो एक जेलसी और वो ईगो इशू बन गया था, और नानी को उन्होंने फिर आगे कंटिन्यू नहीं करने दिया. तो वो जॉब वो नहीं कर पाई थी. बट वो जो एक वो क्या कह सकते हैं उसको, दैट डिससैटिस्फैक्शन वाज ऑलवेज देयर इन हर हार्ट, दैट उनको वो करना था, उनको जॉब करना था, उनको एजुकेशन के फील्ड में जाना था. बट शी चैनलाइज दैट एंड शी सॉ दैट दैट पाथ फॉर हर किड्स. तो उनका ये सपना था कि उनके जो बच्चे थे, उनके 5 बच्चे थे, और 5 बच्चों में से उनका ये सपना था कि उसमें से एक डॉक्टर बने, एक इंजीनियर बने, एक वकील बने. तो ये उनके बच्चों में से सब लोग डॉक्टर, इंजीनियर, वकील है आज. तो और स्पेशली जो मेरी माँ थी और मेरी मौसी जो थी, द वुमेन इन द फैमिली, उनको पढ़ाने का बहुत ज्यादा जिम्मा मेरी नानी ने लिया. नाना जी इतना उसके फॉर नहीं थे. उनका ये था कि जल्दी जल्दी इनकी शादी कर दो और इनको हटा दो घर से. तो नानी इंश्योर्ड की माँ का एडमिशन हो. मम्मी का एडमिशन तब पुणे के सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज में हुआ था. और जब उनका एडमिशन हुआ था तब नाना और घर के सब लोग उन्हें, दे वर नॉट सेंडिंग हर टू पुणे, बट आई थिंक माय नानी, शी फॉट अ लॉट फॉर दैट एंड शी सेंट हर टू पुणे. शी फेस्ड अ लॉट ऑफ ब्रांड फॉर दैट. मम्मी जब गई तब मम्मी और माय फादर एक्चुअली दे फेल इन लव and they came from different castes, and they wanted to get married. They went to the parents and they said कि हमें शादी करनी है. किसी ने अप्रूव नहीं किया.
और तब मम्मी को वापस लेके आए थे गाँव। उनका एजुकेशन सारा खत्म कर दिया था वहीं के वहीं। और उन्हें नानी को बहुत गालियाँ पड़ी थी कि हम बता रहे थे कि लड़की बिगड़ जाएगी, आपने उसको वहाँ पुणे जैसे शहर में भेज दिया है। तो मम्मी का एजुकेशन खत्म कर दिया, घर पे रखा गया मम्मी को। और तब नानी ये किस्सा मुझे माँ मेरी बहुत सुनाती है। और वो उन्हें बहुत इंस्पायर करता है वो अपनी लाइफ में, और मुझे भी बहुत इंस्पायर करता है कि नानी ने जब मम्मी को बंद कर दिया था घर में, तो उन्होंने चुपके से मम्मी को वो लेके गई थी जळगाँव में, जो वहाँ पे थोड़ा सिटी टाइप है, शहर है, जहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन का कोर्स था। और नानी चाहती थी कि कुछ भी हो, ठीक है, घर में बैठ रही है, पर इसका एजुकेशन रुकना नहीं चाहिए। तो उन्होंने मम्मी को वो चुपके से सबकी नज़र के आड़ लेके गई थी और एडमिशन कराया था डिस्टेंस में। और जब एडमिशन डिस्टेंस में कराया, मैं वापस आई, तो बहुत ज़्यादा मेरी नानी ने अब्यूज़ वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस फेस किया था। और वो वैसे ही उन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस फेस किया था। मम्मी का फिर जो भी ये किस्सा था, अपार्ट फ्रॉम दैट माय मदर देन वेंट टू पुणे अगेंस्ट हर पेरेंट्स विशेस एंड शी गॉट मैरिड टू द मैन शी लव्ड. My father comes from a Shudra weaving community. बट और मम्मी पारधी कम्युनिटी से आती है, तो बट वो हायरार्की जो है, दैट्स हाउ कास्ट प्लेज, ऐसी कोई बहुत बड़ी कास्ट नहीं है वीविंग कम्युनिटी। बट पापा की साइड की फैमिली ने निकाल दिया उनको घर घर से, दोनों को। तो मेरा जो अपब्रिंगिंग पूरा हुआ है वो मेरे नानी हाल में हुआ है। मेरी नानी, मेरे मामा और इन्हीं के बीच मेरा पूरा अपब्रिंगिंग हुआ है। आई स्टार्टेड आउट फ्रॉम, आई वाज बोर्न इन अ स्लम इन पुणे, घोरपड़े पेट में। और घोरपड़े पेट मैं बताना चाहूंगी वो एरिया है कि जहाँ पे फूले जी, सावित्रीमाई फूले और महात्मा फूले ने पहला स्कूल शुरू किया था। उनका घर था गंजपेट जिसको कहते हैं, और आज हम उसे गंजपेट नहीं कहते, हम उसको महात्मा फूले पेट कहते हैं। तो वहाँ पे मेरा पूरा अपब्रिंगिंग हुआ। फुलेवाड़ा में मैंने खेल खेले हैं। मेरे माँ-बाप पूरे फुले अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी और इससे आते हैं, तो मेरा पूरा अपब्रिंगिंग वैसे रहा है। मेरे लिए ये कुछ अलग नहीं था मेरा। दिस वाज़ माय फैमिली, द मूवमेंट हैज़ ऑलवेज़ बीन माय फैमिली। अ, बट हम वहाँ पे जब मेरा जन्म हुआ फूले गंजपेट में, तो वहाँ मेरे मम्मी का ये था कि कुछ भी हो, शी इज अ वेरी एम्बिशियस वुमन, आई हैव नॉट सीन दैट एम्बिशन इन माय फादर। मेरे माँ का ये था कि कुछ भी हो, आई विल नॉट रेज माय किड्स इन अ स्लम। And she, that was not something that she had against slums, but I think it was mostly that uh, the kind of dignity that one should have in life. I think she was very hell bent on that we need to give a dignified life to ourselves and to our kids. तो मम्मी ने म्हाडा के जैसे लो इनकम हाउसिंग के एड्स आते हैं, लॉटरी आती है, तो उसमें उन्होंने अप्लाई किया था पापा को बिना बताए। पापा ने बहुत चिल्लाया था, ही वाज लाइक वी कांट अफोर्ड दिस, व्हाई यू डूइंग इट। हमारा वहाँ पे नंबर लग गया, वी गॉट अ हाउस, इट वाज अ वन रूम किचन, वेरी small house. But we had a dignified life in that. I was raised in that house. My father did not come to that house for 2 days because he was so upset with my mother that, we can't afford it, and why are you doing this? So I think that has been, these are the kind of women who have been in my life and who have inspired me, I think. Very strong, very ambitious women who believed in education a lot, and women who believed in giving their kids a dignified life. राइट, सो ये एक्चुअली मैं जब हम जहाँ रह रहे थे नागपुर चार में, नागपुर चार पुणे का एक एरिया है, जिनको पुणे के बारे में थोड़ा बहुत पता है, वहाँ पे बहुत ज्यादा अम्बेडकराइट लोगों का प्रेजेंस है, बहुत अम्बेडकराइट मूवमेंट का प्रेजेंस है, बहुत सारे कॉर्पोरेटर्स, पॉलिटिशियंस उस एरिया से आए हैं। एंड हमारे घर में आना जाना रहता था, पापा के बहुत सारे फ्रेंड्स अम्बेडकराइट मूवमेंट से जुड़े थे। मुझे लगता है कि जय भीम जो है बोलना, उसे समझने से पहले मैंने बोलना सीखा था बचपन में ही। और वही एक रहा है, उस किस्म का अपब्रिंगिंग रहा है मुझे, सावित्री माई की और फूले फूले जी की और
बाबा साहेब की एजुकेशन की स्टोरी, उनके स्ट्रगल्स की स्टोरी, उन्हें स्कूल में कैसे तंग किया गया था, सावित्रीबाई और फुले जी को क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े जब उन्होंने स्कूल बनाया, लहू जी वस्ताद के बारे में मैंने सीखा और पढ़ा। मेरे लिए पुणे का हिस्ट्री जो था, वो जैसे समझते हैं लोग कि पेशवाई का हिस्ट्री है, मेरे लिए तो पूरा बहुजन हिस्ट्री था, मेरे लिए अपने लोगों का हिस्ट्री था। So I have not never known Pune to be a place of Peshwai or a place of Brahminical culture. For me, it has been a place of Bahujan culture where I grew up. So as in how I grew up, my father wanted to put me in a Marathi school क्योंकि आजू बाजू जो नेबर्स थे वहाँ पे हमारे सब लोग अपने बच्चों को मराठी स्कूल में डाल रहे थे, और मम्मी का ये कहना था कि मैं मेरी लड़की को इंग्लिश स्कूल में डालूंगी, और बस कोई इंग्लिश स्कूल में ही नहीं, कोई अंग्रेजी, बस अंग्रेजी मीडियम स्कूल में नहीं, आई वांट टू पुट हर इन अ कॉन्वेंट स्कूल, क्योंकि उनका ये था कि इंग्लिश जो स्किल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और बहुत अननेसेसरीली आपको अंडर कॉन्फिडेंट बनाता है, और ये मम्मी ने फेस किया था अपने कॉलेज लाइफ में, तो वो उन्होंने वो अंडर कॉन्फिडेंस फेस किया था। So she wanted that I have that skill. So she went with dad and she put me in an English medium school, not just English school. और बहुत दूर था, मम्मी मुझे लेके जाती थी स्कूल। मेरे स्टार्टिंग के 4-5 जो साल थे बहुत डिफिकल्ट गए, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द कोई अंग्रेजी नहीं बोलता था, और कोप नहीं कर पाती, समझ नहीं आता था। वैसे तो मैं बहुत बातूनी हूँ, मैं बहुत स्टार्टिंग मैं करती थी बचपन से ही, बट स्कूल में जाके मैं एकदम शांत हो गई, आई थिंक बिकॉज मैं कोप नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे आई डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग एंड कंफर्ट लेवल विद इंग्लिश। 5th-6th स्टैंडर्ड से मैं थोड़ा बेहतर करने लगी, इतना बेहतर करने लगी कि मुझे याद है कि मैं 7वीं कक्षा में थी और आई स्टूड सेकंड इन द क्लास। फिर मैंने रेसिटेशन कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना शुरू किया, मैंने डिबेट्स में पार्ट लेना शुरू किया। स्कूल में वो एक एनवायरनमेंट मुझे के लिए मिला। मेरे मेरे इन एंड अराउंड जो लोग थे वो बिल्कुल मेरे तरह नहीं थे, बट मैं बहुत सीख रही थी उस बैकग्राउंड से। 12th 11th 12th आई डिड साइंस बिकॉज मार्क्स अच्छे थे, तो वो आई थिंक दैट लॉजिक इज देयर कि आपको मार्क्स अगर अच्छे हैं तो आप 11वीं 12वीं में साइंस लो। मेरा वैसे कोई लाइकिंग नहीं था, बट आई टुक साइंस 11th एंड 12th। और आई थिंक 12वीं जब हुई, 12वीं कक्षा में मुझे अच्छे मार्क्स आए, तो मम्मी और पापा का ये कहना था, तब हम पुणे में ही थे, तो उनका ये कहना था कि आप आईटी बूम है तो आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लो। तो उस टाइम पे मुझे ये याद है कि मुझे ईएनटीसी का फुल फॉर्म ही नहीं पता था। ईएनटीसी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो मैंने ईएनटीसी में एडमिशन ले लिया इंजीनियरिंग में, पुणे के कॉलेज में, और मैंने कंप्लीट किया अपना इंजीनियरिंग। बट आई थिंक ऑल थ्रू आउट माई इंजीनियरिंग आई न्यू दैट दिस इज नॉट मी। इनफैक्ट आई हैड डिस्टिंक्शन थ्रू आउट माई इंजीनियरिंग, आई नेवर हैड a drop or KT anything, बट देर वर अदर थिंग्स। मेरे स्पेशली कॉलेज के ग्रोइंग ईयर्स में मैंने बहुत सारा थिएटर किया, मैं बहुत सारा मूवमेंट से जुड़ी, बहुत मोर्चे, धरने, आंदोलन, ये सब मैंने कॉलेज के ईयर्स में किया, और मुझे लगा कि मैं आई विल नॉट मेक अ गुड इंजीनियर। मेरे मेरे मार्क्स है, मैं मेरा प्लेसमेंट अमेजोन में हुआ था हैदराबाद के, और मैं शायद 1-2 साल वहां पे काम करके मैं जा सकती हूँ यूएस, जैसे सब लोग करते हैं। आई कैन डू एन एमएस, I can get an MS degree, I can get a decent job in US, settle there and have that life. But that is not something that was pulling me or attracting me. Also because मेरे parents ने जिस किस्म का life जिया है, दोनों वकील है, बट फिर भी उनका जो सामाजिक काम है और मूवमेंट के साथ जो जुड़ना है वो था, और इस वजह से मैं शायद वो इमेजिन ही नहीं कर पा रही थी कि मैं कोई ऐसी लाइफ, एक सेटल्ड इंजीनियर वाली लाइफ यूएस या यूरोप में जी सकूं। जब इंजीनियरिंग कंप्लीट मैंने किया, एक लोकल कॉलेज से किया। मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि मेरा पूरा जो एजुकेशन है, it's never been some fancy college. I have not gone to an IIT, I have not gone to an NLU, I have gone to local colleges. मैंने इंजीनियरिंग जो एक लोकल कॉलेज से किया, जब इंजीनियरिंग खत्म किया तो मैंने ये डिसाइड किया कि प्लेसमेंट तो हो गया है, बट नाउ
मुझे यूपीएससी करना था। तो मैंने एक्चुअली ये शायद मेरे दिमाग में आइडिया आ गया कि अच्छा यूपीएससी के तैयारी को तो टाइम लगेगा, बट उस तैयारी के बीच में आई कैन वेरी वेल डू लॉ, क्योंकि लॉ के लिए एक नेचुरल अफिलिएशन था मेरे मन में। एंड आई टुक एडमिशन फॉर लॉ। लॉ के लिए मैं भी आई थिंक आई टुक एन एडमिशन इन अ वेरी लोकल कॉलेज इन पुणे। मतलब आपने तो आईएलएस का वगैरह नाम सुना होगा, सिम्बाइसिस का नाम सुना होगा। मैं एक बहुत छोटे से एसएसएमएस लॉ कॉलेज से मैंने लॉ किया। और मैं जब लॉ कर रही थी, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, आई फेल्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स। मैंने यूपीएससी में एक्चुअली दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज फेसिंग एंड टेस्टिंग फेलियर, जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। और मैंने 3 अटेम्प्ट्स दिए। मेरी प्रीलिम क्लियर होती थी, प्रीलिम नहीं होती थी तो मेंस नहीं होती थी, मेंस होती थी तो इंटरव्यू नहीं, ये सब चल रहा था। एंड एट वन पॉइंट इट स्टार्टेड अफेक्टिंग मी मेंटली आल्सो, बिकॉज बहुत आइसोलेटेड फील करने लगी थी। और आई देन डिसाइडेड दैट नथिंग कैन बी डन एट द कॉस्ट ऑफ योर मेंटल हेल्थ। तो उस वो एक बहुत डिफिकल्ट फेज था मेरे लिए कि एवरी आई कुड हैव हैड अ लाइफ which was a settled life, but I chose this, which was very unsettling, a life where I chose a risk and I have failed. तो वो बहुत डिफिकल्ट फेज था मेरे लिए। दैट्स व्हेन जब मेरा लॉ खत्म हुआ, मैंने डिसाइड किया कि मैं घर नहीं बैठूंगी, आई विल नॉट स्टडी ओनली स्टडी एनी मोर। आई देन स्टार्टेड गोइंग टू द कोर्ट, पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और मैंने केसेस लेने शुरू किए। स्टार्टिंग में जो मेरे पास जब केसेस आ रहे थे, तब ये होता था कि क्लाइंट केसेस तो आते थे। आई थिंक व्हेन यू आर अ बहुजन लॉयर यू गेट मैटर्स, यू गेट ब्रीफ्स, बट यू डोंट हैव मनी एंड पेइंग क्लाइंट। तो बहुत बार ऐसा होता था कि क्लाइंट को आप आर्ग्यू करते थे कोर्ट में उनके लिए, और आप बाहर आते थे तो चाय भी आप ही को पिलानी पड़ती है क्लाइंट को। इतना इट्स दैट डिफिकल्ट फॉर बहुजन लॉयर स्पेशली इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स टू सर्वाइव। सो जब मैंने केसेस स्टार्ट किए, मैंने अट्रॉसिटीज के केसेस लिए, फॉरेस्ट राइट्स के, जैसे मैम ने बताया, मैंने केसेस वो लिए। एंड दीज वर ऑल क्लाइंट्स फ्रॉम दलित, बहुजन, आदिवासी कम्युनिटीज, बिकॉज आई डेंट वांट, मेरे दिमाग में बहुत क्लियर था कि मुझे कोई कॉर्पोरेट लॉ प्रैक्टिस नहीं करनी है। दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। मैं आई थिंक 2017 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट था। इट वाज कॉल्ड दलित ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स प्रोजेक्ट, और उसमें एक लीगल रिसोर्स सेंटर सेटअप करना था। एंड आई वाज हेडिंग दैट लीगल रिसोर्स सेंटर, और वहां पे बहुत ज्यादा हमने काम किया लीगल एड प्रोवाइड करने का, लीगल एडवाइस प्रोवाइड करने का, लीगल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रहे थे। वी वर गोइंग टू कोर्ट्स, वी वर गोइंग टू डिफरेंट कमीशंस, and we were helping people get good legal representation in courts and commissions, and these are all people from marginalized Dalit, Bahujan, Adivasi communities. uh, I think that's when 2018 Bhima Koregaon happened, at this very ghastly attack and atrocity, mass atrocity, social boycott that happened in Bhima Koregaon, and that we all know of, and that really hurt all of us of what had happened. और तब Bhima Koregaon judicial commission बैठा था। I think I was one of the youngest and the only female lawyer actually who was appearing before the Bhima Koregaon Judicial Commission. और जैसे मैम बता रही थी, अमृता मैम बता रही थी कि आपको देखने का एक आप औरत हो इसलिए देखने का एक नजरिया तो होता ही है कि you are looked as someone who is not as capable, someone who is not as intelligent. बहुत बार आप आर्ग्यू करते हो कोर्ट में, आपके पीछे बैकबाइटिंग करते हैं लोग, आप जैसे दिखते हो उसके ऊपर कमेंट करते हैं। ये आई डोंट थिंक दिस हैपेंस विद मेन, कि उनको अपनी इंटेलिजेंस को प्रूव करना पड़ता है हर मोमेंट पे। बट एज वुमेन वी हैव टू डू दैट, एंड स्पेशली एज वुमेन हु स्टेप आउट, who are in courts, who are in public life and in social life. तो ये आई थिंक भीमा कोरेगांव के जो जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बैठा था, तो इनफैक्ट बिकॉज आई वाज आल्सो वेरी यंग, आई वाज आल्सो द ओनली वुमन, एक देखने का नजरिया जब मैं आर्ग्यू करती थी तो इवन जजेस का ऐसा था। मुझे एक बार जज ने कहा था, यू लुक लाइक एलिस इन वंडरलैंड in this court, which is very very untoward a comment for a judge to pass, and a high court level judge. But ये सारे comments आप बहुत फेस करते हो, I think that's
where your arguments have more importance than have less importance than other things. तो उस भीमा कोरेगांव में काफी हमने अच्छा आर्ग्यूमेंट्स किए, और मुझे लगता है कि एक टिपिकल लॉयर नहीं बनना था, तो मैं नहीं बनी रही। हम एवरी वीक मेरा एक दोस्त है, मैं उनका नाम लेना चाहूंगी, प्रभाकर सोनावने, और हम लोग वकील है वो भी, और हम लोग कुछ नहीं बाइक लेके निकलते थे, और हर वीक हम भीमा कोरेगांव विजिट करते थे, फैमिलीज को मिलने, क्लाइंट्स को मिलने, विक्टिम्स को मिलने भीमा कोरेगांव के। I think I really want to get to the point of need for Bahujan lawyers, and litigating lawyers in courts of laws, and not just in courts of laws. And by that I don't mean district courts and lower courts, because I think in the lower courts you will find quite a few Bahujan lawyers. You find quite a few Dalit Adivasi lawyers. But as in how you move up in the higher judiciary, you see that the representation is minuscule. And it's also very disturbing because we have our cases in the high courts and Supreme Court, but we do not have our lawyers represent us, right? And I think that's a very disturbing thought to me. I think I'd give a small example of how my journey to the Supreme Court went, and then I want to talk about what is the need for our lawyers to be in the Supreme Court. While working in the atrocities cases, there was a 2018 judgment in Subhash Mahajan, a very disturbing judgment, which diluted the provisions of Atrocities Act, right? And there was an uproar all over the country. And when the Supreme Court diluted those provisions, you can't do anything, because that's a precedent. When the Supreme Court says it's a precedent. And the nation, all the agencies have to follow suit. Um, the practice in the lower court in the atrocities cases had become so difficult, because already the Supreme Court had set a precedent. You couldn't even move in atrocities cases. Filing an FIR, lodging an FIR in the most gruesome atrocities had become extremely difficult, because the Supreme Court had said that a preliminary inquiry will happen before an FIR is lodged in atrocities cases. And it was, I think, that was the time I felt that this is not the place for me to work, because here I can do one or two cases here and there for my people. But if there is a very large scale impactful work, especially in my field, that will have to be done, it will be have to done at the level of the Supreme. um, an amendment happened after that in Subhash Mahajan. The Atrocities Act was amended by the Parliament, but ये बात होती है कि आप Parliament amend भी कर देता है, even then it has to pass the scrutiny of the Supreme Court. So when the act was restored by the Parliament, and it was again challenged, that Amendment Act was challenged in the Supreme Court, saying that this is violating the Constitution, and this is violating the basic constitutional framework. I think I appeared in that matter, and I was assisting Miss Indira Jaising. She was representing the victim in the case, and we had a fair amount of success. She also had me on board to a great extent, because I had experience of working in atrocities cases at the ground level, right? And we managed to get all those cases before the Supreme Court. We brought a case where a Dalit man was force-fed human excreta just 2 months before, the Subhash Mahajan judgment, where the Supreme Court said that Atrocities Act is being misused, and that Dalit man was force-fed human excreta, but it took some 2 months for the police to even lodge an FIR. So we tried to bring these kind of cases before the Supreme Court, and I think it was very important to be there at that point in time. After, I think, Subhash Mahajan, a very impactful and a very important judgment for the community has been the Jarnail Singh judgment of 2019. And I had the privilege and the opportunity when I was in the Supreme Court to work on that judgment. It was a judgment on reservation promotions. And as we know that scheduled caste and scheduled tribes have reservations and promotions, a lot of us are also doing well in some way or the other, because reservation has been a crucial part of our lives. Reservation has not just been
like a tool or a ladder for us. It has also been a very revolutionary, radical game changer for us, right? And the Supreme Court again had diluted, the reservation and promotions policy. And then in the Jarnai case, what had happened was that it had set three criteria, and three criteria were basically barriers in giving reservation, which meant that there was no reservation policy, right? And one of those criteria was that if you're a scheduled caste and scheduled tribe person, you will have to prove your backwardness, right? And this to us will be absurd, because you are backward on account of your there's historical injustice, there's historical injustice. These are arguments that we made before the court. We said that it is this whole idea is so absurd that a scheduled caste and scheduled tribe person has to prove his or her backwardness to get the benefit of reservation. And we got a fair amount of success in journalism at that time. And the judge, it was a constitution bench, a five judges bench in that judgment said that one doesn't have to prove that backwardness. Again, a very impactful judgment. A lot of states started implementing reservation policy and reservation and promotions after that judgment. So I had the opportunity to work on that. I think after that, I think one very important judgment, and I'll just quickly sum up after that, is the Sabrimala judgment, and we've heard of the Sabrimala case, all of us. A nine judges bench, a constitution bench, sat in Sabrimala. And I think, how as a Bahujan lawyer, what can you do and what can you bring to the whole narrative in the higher judiciary, which is extremely Brahminical in that sense. The setup is Brahminical, the judges are Brahminical, the lawyers and the seniors who are arguing are Brahminical and Brahmins and Banyas, right? And what is it that you can do there? So in Sabrimala, the practice of not allowing women to enter the temple, right? Because they are menstruating women. We made a very sociological argument in that. And one would say that, it is not a good practice to make sociological arguments in the Supreme Court, but we made an argument saying that this practice of not allowing entry to women in the temples is an untouchability practice. And therefore, it is violative of Article 17. And that Justice Chandrachud took from that, right? And I think me being there, that presence over there is also something that we can really add to this whole narrative of how these precedents are set by the higher judiciary. I think that I feel it is a very low, because there are no Bahujan lawyers, there are no Dalit Adivasi lawyers in the Supreme Court in and around. They are not seniors. So let me tell you that in support at this point in time, 70, 75 years after independence, after the Indian Constitution came into being, after Article 16 and 14 and 17, they designated senior counsel from a Dalit, Adivasi, or Bahujan community in the Supreme Court, and that is a shame. I think our clients are still having to go and be at the mercy of Savarna Brahmin lawyers in the Supreme Court, right? And therefore there is an immense need for us to not think small. A lot of us, even when we do law, we think that it's better to take up, go for judicial exams, or it's better to get into academics after doing law. But I would really urge you to think of this as an opportunity, an immense opportunity to serve your community, to get into litigation, to argue in courts. I would just give one small example of the Black movement in the US, the civil rights movement. How uh, the NAACP was a major organization which led the civil rights movement in the US, and the NAACP had something called as the Legal Defense Fund. Now, that Legal Defense Fund was a crucial part. In fact, it was an integral part of the whole civil rights movement. That fund was created to give defense by the Black people to defend their own community and their rights, right? And from that that Legal Defense Fund, that LDF of NAACP, which was founded by Thurgood Marshall, by the way, uh, came the Brown versus Board of Education, which was a landmark judgment. Brown versus Board of Education is the judgment which abolished
segregation practices, right? So it was one of the landmark cases in the civil rights movement, and the LWF LDF still continues. There, they have this system, the movement, the civil rights movement, the Black Rights Lives Matter movement over there have this system where they are invested in the legal fight for the community, right? And I feel that there is an immense need to have that back here in India for the marginal communities, for Dalit, Bahujan, Adivasi communities. And I think we need to start thinking in that direction. And I think the starting point to that would be us, as students, as wanting to take up legal education, wanting to then go to courts, and not just lower courts, but also the higher courts. I think that's where we could, envision something like that. So I think I'd like to end there. Jai Bhim, Jai Savitri. Thank you. Jai Bhim, Jai Bhim. Thank you so much, Disha Wadekar. You're a walking, talking powerhouse, and salute to all three women, your Nani ji, your mother, and you for being such badass women. And so thank you so much again.